Shifting focus to Maharashtra, where politics over slapping sedition charges on the MLA MP Rana couple, Navneet Rana and Ravi Rana, is escalating even further. This even as the Ranas' plea to quash the second FIR against them for obstructing a public officer from doing his duty today was dismissed. Bombay High Court. Remember, the hearing in the FIR that is related to the sedition case is due only later this week. The Rana duo were arrested for merely daring to chant the Hanuman Chalisa outside Uddhav Thackeray's residence. What is even more shocking is that among the charges slapped on them was sedition. But 16 Shiv Sainiks who were accused of vandalizing the Rana's houses got bail, even those who were accused of targeting BJP leader Kirit Somaiya. And that is why the BJP has now come out all guns blazing, slamming the Thok Tantra of the Shiv Sena, asking if indeed just the recitation of the Hanuman Chalisa is equivalent to sedition. अशी एक म्हण आहे की साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा. पण आमच्या घरामध्ये दिवाळी असो दसरा असो किंवा नसो साधू संत येतच असतात. शिवसेना प्रमुख होते, माँ होती तेव्हाही येत होते, आताही येतात. पण ते नीट बोलून सांगून येतात की मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, आइए जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू. पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे. इथं महाराष्ट्र आहे, आमची ताकद तेवढीच आहे. जर सरकारला वाटत असेल जशास तसं उत्तर पाहिजे तर ते देण्याची ताकद आणि हिंमत भारतीय जनता पक्षामध्ये आहे, हे स्पष्टपणे सांगतो. पण आम्ही लोकशाही मानणारे लोक आहोत, लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करतो. आमच्याशी ठोकशाहीने वागाल, उत्तर तसंच उत्तर. ऐसा कोई पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा है कि जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है. अभी बीजेपी के कितने नेता हैं, लेकिन 2-4 नेता अगर ऐसा एकदम अशांति निर्माण करने के लिए कृत्य करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या पुलिस चुप बैठेगी? You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Vikram Singh Yadav, leader of the Shiv Sena, joins us along with Qamar Zaman Chaudhary, leader of the Congress. First question to Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the BJP. The Chief Minister today said that you want to recite Hanuman Chalisa, you're welcome. Shehzad Poonawalla, दादागिरी मत कीजिए, दादागिरी से डील करना आता है. You know, it's very sad that son of Swargya Balasaheb Thackeray ji believes that reciting Hanuman Chalisa is actually seditious or it involves dadagiri. Because if that is the case, then I wonder that Nawab Malik, who has not got relief from the Supreme Court for having relations with Dawood Ibrahim's gang, well, that person, forget sedition, they haven't even been able to remove him from the cabinet. It's unfortunate that the BJP, the Shiv Sena doesn't believe that there's a lot of echo, if that could be corrected. Those who say Hindutva is like ISIS and Boko Haram, that is not seditious. It is unbelievable that the Shiv Sena, for those who say Afzal Hum Sharminda hai, Tere Qatil Zinda hai, and take them into the party, that is not seditious for the Shiv Sena. And nor is the statement of Mateen Shekhani, who actually challenged law and order in Maharashtra and said, Chhedenge to chhodenge nahi. So saying Hanuman Chalisa in public is dadagiri, but all these slogans by Congress people and their allies is not seditious. Bataiye, Qamar Zaman Chaudhary, somebody who was actually accused of sedition could soon be your party president in Bihar. Mateen Shekhani never invited sedition charges. But this couple has. Why? Of course, Jignesh Mewani, after coming out of the bail, he has again been arrested on a false charges just because he tweeted for peace. That instance we have. Here in this case, there are two issues out here. One issue is reciting the Hanuman Chalisa. When it happens in Maharashtra, they are the most dipped in gold 24-carat charges. What have you gone? Are we discussing Jignesh Mewani? I just brought out a reference. No, I don't know. Because You brought up Jignesh Mewani. 2-3 references. Because if you want to talk about the specifics of Jignesh Mewani's case, we can do that another day. Right now, as an erudite person, how exactly is chanting of Hanuman Chalisa outside the gates of Matoshri equivalent to sedition? Just that.
How is it equivalent to sedition? Okay, there are two issues involved out here. There are two issues out here. One is the reciting of the Hanuman Chalisa and another is the imposition of the sedition charges. Now in the first case, the latest poster girl of Hindutva, Mrs. Rana, seems to bring in an atmosphere of distrust, a confusion, a conflict within Maharashtra, within Bombay. How? How is she sitting outside Maharashtra, confusing and conflicting you, Mr. Chaudhary? Just give us an example. Acha, Padmaja. This evening, Padmaja, why are you confused and conflicted because of Navneet Rana? You being because Padmaja, when you come out of your house every day as an Hindu, I believe you cite the Hanuman Chalisa and then you come out of your house. I don't come out of my house as a Hindu, I come out of my house as a human being. Now but that aside, challenge. How does somebody get conflicted or plunged into chaos or confused? How does Navneet Rana, Padmaja, let me finish first. How does Navneet Rana want to recite the Hanuman Chalisa outside the Matoshri? Sir, Matoshri is a that may be a disruption of public order, etc. as the Bombay High Court has upheld today. Today, Bombay High Court upheld that being a public representative, she should not create chaos. You tell me, how is this sedition? My question to you is specific to sedition. How is it sedition? No. What Bombay High Court said. Bombay High Court says with responsibility, with power comes greater responsibility. So what responsibility she did today? Sir, that is fine. That the Bombay High Court has upheld. There is no point us in arguing it. Chaos. There is no point in us arguing it. You tell me, how is it sedition? Now the first point. How is it sedition? I am coming to that before you keep on interrupting me. Okay. You keep on interrupting me and my flow goes on. Right. Let me just interrupt. Give me 1 minute at least. Okay. The first point is that when Hanuman Chalisa or Jai Shri Ram has been made a political tool by these BJP's people, that is the first objectionable thing that they have done to this country. Even if it is a political tool, how is it sedition? A pious Hanuman Chalisa. That might be the case. It may be terrible politics, it may be religious opportunism. How is it sedition? 1860 the law came into being. Yes. From 1860 till 2014, how many people were arrested? Sir, now are you giving me history lessons? On sedition? Just tell me, how is reciting Hanuman Chalisa sedition? How many it is not. The Hanuman Chalisa is not there for the sedition case. The point is that when she tried to disrupt the public order, she tried to create chaos within Maharashtra, within Bombay. It was aptly that the Hanuman but there are separate sections on that. Correct me if I am wrong, Shehzad Poonawalla, for creating chaos, for holding up traffic. You can even book her for rioting. But how is it sedition? How is it sedition? Sedition is literally Deshdrah. Much more that Shehzad will also be able to tell. There are news reporters who have been. What about Siddiq Kappan? He wanted to go to Uttar Pradesh to cover up a story. Okay, he was charged with sedition. Put on your hat of a lawyer and tell us, because Mr. Chaudhary is certain this is sedition because she's sitting outside the gates and there is general unrest and chaos and confusion. Shehzad Poonawalla. Padmaja, under the various judgments of the Supreme Court on sedition law, it has been clarified that even the most distasteful statement, which may or may not cause confusion, chaos, etc., unless there is an element of violence, and violence that takes place almost instantly in reaction to the statement that is challenging the writ of the state and not the writ of any political party or any political personality, that constitutes sedition. So by the way, just creating confusion, chaos, disruption is not seditious. And the Congress party ironically wanted in its manifesto to do away with the sedition law. They wanted sedition not to be applied even on the likes of Umar Khalid, where the riots have taken place post his statement. But in this particular case, where there's no violence, there's no imminent violence, there they want sedition to be applied. And just the last point that I want to make is that, look at this. If this is seditious, one second, sir. Sir, please, that's what I'm saying. The court has, so are you challenging the courts now? What charges now you are just saying courts have sent what happened now to you're saying courts are not to be believed. What happened to Mr. others? Chaudhary, I don't believe in interrupting. Sir,
Chaudhary ji, Father I Stan don't think. Swami, Chaudhary ji, I Father don't Stan believe in this Swami. kind of debate. Why Please, don't you let me one at a complete time, my one at a statement? time. Citing this thing Chaudhary, out You of got your context. full Let time us to not explain the why you kind thought of it was sedition. discussion. Now let Yes, Shehzad Poonawala Article respond. 20. Yes, Mr. Poonawala. Just a couple of points. If for Navneet Rana to say that she wants to recite the Hanuman Chalisa outside the CM's house is seditious, then by the same logic, and I could see that NCP lady, Mr. Famida Hassan Khan, sitting here, then by the same logic, these people should say that even that is seditious because that is the official residence of the Prime Minister where she wants to go. Although I have no problem, but I am saying that if this outside the private residence of Mr. Uddhav Thackeray becomes sedition, then surely outside the official residence of the Prime Minister that should be seditious. There should not be double standards. And this is the kind of double standards they have on all of these issues. This is संगत का असर. कांग्रेस के संगत में रहते रहते शिवसेना वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऐसे संक्रमण में आ चुकी है that they've compromised on Hindutva, they've compromised on Savarkar, they've compromised on all these issues of Swargya Balasaheb Thackeray, and today Hanuman Chalisa is seditious for them. बताइए विक्रम जी, आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे आज उन्होंने कोर्ट में क्या कहा अबाउट व्हाई सेडिशन हैज बीन यूज्ड. उन्होंने बोला राना's intention was to overthrow the government. Motive was not pure and simple as just reading Hanuman Chalisa. It is to create law and order situation. They wanted to challenge state machinery. It was cold-blooded and premeditated. आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने से सरकार कैसे गिर जाती है. बिकॉज ये कहा जा रहा है कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ के दे वांटेड टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. मतलब इतना सिंपल होता तो कांग्रेस तो पिछले 7 साल से हनुमान चालीसा ही पढ़ती दिन रात. बताइए विक्रम जी. नहीं पदम जी, ये तो नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. देखिए एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है. अब हनुमान चालीसा का किसी का विरोध नहीं है. क्या आज पहली बार पढ़ रहे हैं क्या हनुमान चालीसा? ये लोग ऐसे माहौल बना रहे हैं. देखिए विरोध जो है वो एक मुख्यमंत्री के पद की गरिमा होती है. पूरे वो एक ऐसा परिवार है कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों की, पूरा महाराष्ट्र क्या सभी पूरे देश के लोगों की आस्था जुड़ी हुई इस परिवार के साथ. और उसको एक धमकी देख करके और आप ये चैलेंज करके कि नहीं हम उनके घर के आगे पढ़ेंगे, तो ये कौन सी श्रद्धा वाली बात है? आप मंदिर में पढ़िए ना. ये देशद्रोह कब से हो गया? हनुमान चालीसा राष्ट्रद्रोह देशद्रोह में कब से आने लगा? नहीं. आप उन पे हर दफा लगा दीजिए. आप उन पर कंस्पिरेसी लगा दीजिए, आप उन पे दंगे की लगा दीजिए धारा, आप उन पे डिस्टर्बिंग पीस की धारा लगा दीजिए. राष्ट्रद्रोह कहां से हो गया? और राष्ट्रद्रोह को जस्टिफाई करने के लिए आप कह रहे हैं कि ये सरकार गिराना चाहते थे. हनुमान चालीसा से पढ़ने कहां सरकार कैसे गिर रही है? अमरावती से आप अमरावती से आकर के और यहाँ पे इस तरीके का ये कर रहे हैं जिससे कि लोगों की भावनाएं भड़क करके और ऐसा एक सिचुएशन कितने आपके नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो दिल्ली से हाथरस तक जाते हैं. कल को आप कहेंगे उन सब पे राष्ट्रद्रोह लगा दिया जाए. क्यों? क्योंकि वो अमरावती से मुंबई आई है तो राष्ट्रद्रोह हो गया. ऐसे तो कोई भी अपने शहर से दूसरे शहर जाके कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता. आप उन पे राष्ट्रद्रोह लगा देंगे? नहीं तो कोई भी ऐसे चैलेंज नहीं करता कि मुख्यमंत्री के घर के सामने पढ़ेंगे. भाई कल को कोई बोलेगा मोदी जी के घर के सामने पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं. कल को आज ये बोल रहे हैं, कल को कोई और आके बोलेगा कि मैं नहीं पढ़ूंगा. तो ये जो लोग जा रहे थे वो सेंट्रल दिल्ली में जाके बैठ गए, धरना देने लगे. कितने लोग थे महीनों तक शाहीन बाग में बैठे रहे. आप एक कितने सांसद है जो कि संसद के ठीक बाहर धरना देते हैं? आपकी पार्टी के सांसद थी जिन्होंने कितने महीने तक संसद में धरना दिया. राष्ट्रद्रोह लगा दे उन पे. वो तो मुंबई से आके धरना दे रही थी पार्लियामेंट में. देना एक अलग चीज है. धरना देना एक अलग चीज है. आप वहां पे पूजा करेंगे तो धरने से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हनुमान चालीसा बोलने से प्रॉब्लम है. उसमें राष्ट्रद्रोह हो गया. नहीं हनुमान चालीसा आप मुझे बताओ, हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़नी चाहिए या ऐसी जगह पे पढ़नी चाहिए? शहजाद आपने देखा होगा नीतीश राणे ने ये कहा कि महाराष्ट्र में 24 घंटे अपने घर में पढ़िए. अजीत पवार ने भी बोला आपके पास घर नहीं है, घर में पढ़िए. क्या चीज है? जैसे दूसरों के घर में घुस के मत पढ़िए. शहजाद पूनावाला. ओवैसी ने कहा था, जैसे ओवैसी ने कहा था, पद्मजा मैं जवाब दे सकता हूँ? हाँ जवाब दीजिए. अपने घर में क्यों नहीं पढ़ रहे? आप ओवैसी को ही कोट कीजिए. अब सुनिए,
हाँ पद्मजा, हनुमान चालीसा तो ऐसी हनुमान जी की स्तुति है जो अक्सर लोग मुश्किल की घड़ी में पढ़ते हैं. मीन्स इफ अ बॉय इज गोइंग फॉर एन एग्जामिनेशन, उसको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ लेता है. कोई परिवार अस्पताल में तो हनुमान चालीसा पढ़ लेता है. थोड़ी सब लोग घर पर पढ़ते हैं. परंतु मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ना सार्वजनिक जगह पर यह सेडिशियस है, तो मैं एक यादव जी से एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब दे. अगर कोई जोर जोर से ये चीखे कि मेरा मजहब सबसे सही मजहब है, बाकी सारे मजहब गलत है, और जो इन मजहबों को फॉलो करता है, धर्मों को फॉलो करता है, इन लोगों की मौत होनी चाहिए, और सार्वजनिक जगह पर ये बार बार बोले, क्या इस पर सेडिशन लगना चाहिए? बताइए विक्रम जी. अरे भाई, आपकी सरकार आपको नेशनल पॉलिसी बनाते क्यों नहीं हो? उसको महाराष्ट्र भी फॉलो करेगा, सब लोग फॉलो करेंगे, आप बनाइए. नहीं, मुझे एक बात नहीं, मुझे बताइए क्या इस पर सेडिशन लगना चाहिए? क्या आपको लगता है? आप बनाइए ना. आपके लिए हनुमान चालीसा सेडिशियस है? ये सेडिशियस है कि नहीं है? अरे सिंपल से हनुमान चालीसा का कोई विरोध नहीं है. हनुमान चालीसा का कोई विरोध नहीं कर रहा. आपने हनुमान चालीसा को सेडिशियस बोला, ये सेडिशियस है या नहीं है? मोहित कंबोज, आपका एक विधायक है मोहित कंबोज, वो लाउड स्पीकर बांट रहा है. यादव जी, मुझे आपकी एक बात समझ में आ गई. नहीं, यादव जी चिंता मत कीजिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आजकल ठीक है, नीतीश राणे को छोड़ दीजिए, मनोज कंबोज को छोड़ दीजिए. मैं एक चीज समझ गया कि आप लोगों ने ऐसा समझौता किया है सत्ता के लिए कि आज अगर कोई हनुमान चालीसा बोलता है तो वो तो सेडिशियस है. अगर कोई हनुमान चालीसा बोलता है वो तो सेडिशियस है. परंतु अगर ये बात बोली जाए तो इसको आप सेडिशन में नहीं बोलोगे. क्या कल कोई नमाज सार्वजनिक जगह पर पढ़ेगा, कोई इस प्रकार के नारे लगाएगा तो वो सेडिशन नहीं होगा? You know, the interesting thing is that ultimately this too will be decided by the court. The simple argument is, all right, if there is a disturbance of public order that has been done, by all means, charge people for that. But then to bring in a law which you yourself called draconian at one point, only in order to silence and bully the person in front of you, isn't that reeking of intolerance? We asked it last year when it happened to Kangana Ranaut. We're asking it again when it's happening now. Thanks very much, all gentlemen. What happens in court, we'll keep a close watch. Thanks for watching.